Hello everybody, in this video we are going to learn the 3H formula that we can use to create content for any social media platform. Okay? किसी भी social media platform पे content बनाने के लिए 3H formula काम करने वाला है. So the first H here represents hero. You'll have to find your hero. For whom are you making this content for? आखिर किसके लिए content बना रहे हो आप, right? आपका टारगेट ऑडियंस ही आपका हीरो है. फॉर मी, माई टारगेट ऑडियंस, माई हीरो is a 21-year-old imaginary Aman who has just completed his graduation or maybe is in finals. Okay. Now I'll have to find what does he want, right? So उसके पास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रेजेंट में हो सकता है वो किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा हो, और फ्यूचर के हो सकते हैं उसके कुछ डिजायर्स हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सपोज इसके पास्ट के प्रॉब्लम्स में ही माइट नॉट हैव लर्न द प्रॉपर स्किल्स. प्रेजेंट में वो स्ट्रगल कर रहा होगा, हो सकता है स्किल्स सीखने के लिए, या फिर स्ट्रगल कर रहा होगा अपॉर्चुनिटी ढूंढने में, या फिर हो सकता है वो स्ट्रगल कर रहा हो कोई डिसीजन लेने में, राइट? और उसके फ्यूचर के डिजायर्स है दैट ही वांट टू हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ. इन सारे आंसर्स के बाद हमें अब सेकंड एच जानना है, एंड सेकंड एच इज कॉल्ड हब. हब मींस प्लेसेस वेयर योर हीरो इज फाउंड ऑनलाइन. आपका हीरो ऑनलाइन कहां पे है, राइट? ही माइट बी ऑन इंस्टाग्राम, ही माइट बी ऑन यूट्यूब, ही माइट बी ऑन फेसबुक और एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, ट्विटर एंड ऑल, राइट? सो you'll have to find the second thing, that is hub. And then we'll have to understand why is he there. People are there on social media either to escape from their problems, either to have the entertainment, escape from everything else, right? And the second thing is to seek the solution, to seek the solution to what they're struggling from, right? इसके बाद आता है third H. Third H means how to. कैसे? How we can help them. सबसे पहले हमें सवाल करना होगा how we can help them. What are you good at? Be a guide. गाइड बनना होगा आपको. Don't try to be a hero. हीरो बनने की जरूरत नहीं है. दे जस्ट वॉन्ट देमसेल्व्स टू बी अ हीरो. आप समझना है यहाँ पे, अगर अमन किसी को कार में देख रहा है, महंगी सी कार में ना, तो वो उस इंसान के प्रति उसके अंदर में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है. What he is having inside him is कि मुझे भी ऐसी कार खरीदनी और उस सीट पे मुझे बैठना, राइट? He just wants himself to be a hero. और किसी को हीरो नहीं देखना चाहता वो. So don't try to be a hero. Don't try to show off. Just be a guide. Guide the process through which he can be a hero. So अमन की कैसे हेल्प कर सकते हैं हम? He might be on Instagram to escape from his struggles, right? And he's on YouTube to seek the solutions for which he is struggling for, right? So मैं क्या कर सकता हूँ? I cannot dance, I cannot entertain him, and I cannot be a reason for his escape, right? So what I can do is, now see, I strongly believe that leaders love education and victims love entertainment. So what I'll be doing is, I'll be on Instagram to tap onto his pain and create a curiosity for solution, and be on YouTube to give a solution, right? But there is a question in him. आप होते कौन हो solution देने वाले? आखिर कौन है ये आदमी, right? So here I'll have to gain the authority. मैं आपको बता दूं, मैं भी आपके जैसा ही था, right? I have completed my graduation from computer application और कुछ भी समझ नहीं आया, तो I started my career as a school teacher. And then went on to joining network marketing, फिर sales में काम करा, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करी, पब्लिक स्पीकर्स के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, और कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस के बाद now I'm running a web development and digital marketing agencies, working with a few big brands of India and also of abroad. I have also been trainer for Indian government, और हमें इसके लिए दूरदर्शन में बुलावा भी आया था. After having all these experiences, here I am doing what I love, training and simplifying the solutions. Okay. So firstly, we are going to explore together options like what to learn, what are the opportunities, and what tools can we use. Secondly, we'll gain experience wherein I'll be teaching you skills that I know and I'm good at. Okay. Now you can examine and make a decision what is good for you. Okay. And then we'll work to expand ourselves, to expand our work, to expand our influence, and to expand our existence. Okay. Well, this was the 4E philosophy of my life. In the first E, while exploring, you might not be earning any money. Second and third E works together, and you may get some money. But the fourth E is where you will earn the fortune. So if you want to explore how we can achieve the best from next 3 months and get the results of a whole year in just 12 weeks, पूरे एक साल में जो results मिलने वाले हैं, उसे अगर 12 सप्ताह में 3 महीने में achieve करना चाहते हो, तो do check out this video.